There are many ways through which India is imagined across the world. It's a civilizational nation state. It's very diverse when it comes to its class, caste, creed, culture, food choices. It is a democratic country with the highest number of population anywhere present. It has a huge potential. And one of the ways India is imagined is that India is deeply unequal society. That we are superstitious, deeply unequal, we lack hygiene, we lack civil culture. There are many ways through which India is imagined, obviously on a negative connotation. Now, this has become a cliche to be used again and again by policymakers, by analyticals, firms, and by political leaders alike around the world, including in India. Cliche क्या होता है? Cliche is an overused expression which has lost its meaning. In this lecture for today, I am going to analyze this key point that India is no longer an highly unequal society on the basis of data, on the basis of fact. Welcome to SRIRAM IAS. My name is Saurabh, and today we are going to look into a very important report which has came about, which talks about that India is doing way too better than we expect and imagine when it comes to equality domain. So inequality and equality are like moon and sun. When the moon comes up at the night, the sun goes down. And when the sun comes up in the morning, generally the moon goes down. Sometimes they coexist side by side. So equality क्या होती है? Equality is nothing but in a state of situation where individuals are treated fairly. They have access to opportunities, resources, power, status in a fair manner in a society. तो उसको हम बोलते हैं कि वो equal society होती है. It could be politically dimension में political equality, social equality, economic equality. There are variety of ways equality is assessed. और साथ ही साथ inequality is also a very important marker of how good as a society that we are doing. तो inequality क्या होती है? Inequality is nothing but the structured and systematic way through which a group of people are denied opportunities and resources. So India was seen as highly unequal society. Why? Because we are a society जहाँ कास्ट इमर्ज होती है, जेंडर के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है. ये बात बार बार हमें सुनने को मिलती रही है. Whenever we read the international magazines, even Indian newspapers, so much and so forth. Now that is going to change because of what the new data from the World Bank is telling us, and that India is becoming far more equal than we imagine. और ये जो रिपोर्ट्स पहले पब्लिश होती रही हैं, that India's richest 1% own more than 40% of the total wealth, there are highly sensationalizing reports. India's income inequality is 2023 higher than the 1950s, higher than the British era colonial period also. There are many such reports which we read, जो कि काफी सेंसेशनल एक फीलिंग जनरेट करती है that India's democratic experiment after 1950 was is no longer working, at least for Indian poor. तो ये जो बात कही जाती है, जो आप देख रहे हो, दिस इज नो लॉन्गर वैलिड, एंड हैव और हैव नॉट्स के बीच का जो गैप है वो काफी तेजी से कम हुआ है. The access to opportunities, resources, status, and power, basically the gap among different groups, it is declining. Now, your data, I'll quote you the data. The World Bank data is saying that India is not only the world's fourth largest economy, we are the world's most equal society as well. India is far more equal than G7 and the wider G20 member grouping जो है, and even to China, we are 10 points higher, 15 points higher than the United States of America. So this data that we are talking about is Gini index. Gini index is a very important index in economy. We use this data to assess how equal or unequal is particular societies economically class basis पे. तो ये index measure करता है to the extent to which the distribution of income or consumption by the households is in economy deviates from a perfectly equal distribution. Perfectly equal distribution is a theoretical concept. Practically ऐसा नहीं होता. Practically, obviously, there will always be deviation. So imagination है ये कि perfect equal score होगा.
कभी नहीं होता, इन प्रैक्टिस इट नेवर हैपेंस, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट benchmark through which we assess relatively the other countries. A Gini index of 0 means perfect equality, 100% means perfect means inequality. इसी से गिनी कोफिशियंट बनता है, उसको आप 100 से डिवाइड कर देते हो, 0 to 1 उसको मेजर करते हैं, हम गिनी इंडेक्स की बात कर रहे हैं 0 to 100. तो लॉरेंज कर्व जो कि प्लॉट करता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम रिसीव्ड, परसेंट ऑफ इनकम एंड क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, इन दोनों को रखता है कर्व के अंदर. एंड देन यू हैव अ इमेजिनरी लाइन, द लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्री, विच टॉक्स अबाउट द परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अक्रॉस सोसाइटीज हाउस होल्ड. लेकिन ऐसा नहीं होता. सो जो रियलिटी होती है, ये जो बी आप देख रहे हो, ये जो कर्व मूव हो रहा है, ये हम यूज करते हैं बीच का जो एरिया होता है एक तरीके से, ये जो एरिया है बिटवीन द लॉरेंज कर्व एंड हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी एज ए परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम एरिया under the line through which we calculate the Gini index. This is how we do it. तो लॉरेंज कर्व को ड्रॉ करते हैं, उसमें परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी 45 डिग्री पे होती है, उससे एसेस करते हैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट टेल्स यू कि जिनी इंडेक्स क्या होगा. नाउ ये डेटा, ये रिपोर्ट जो आई है, दैट इज बेस्ड ऑन नेशनल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिन्हें हम HPCs कहते हैं. 2022-23 का डेटा इंडिया के पास अवेलेबल है, जिसके आधार पे वर्ल्ड बैंक ने ये अपना असेसमेंट दिया है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजम्पशन है, इट केम फ्रॉम नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड सर्वे. इन इंडियाज केस, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, विच इज कंडक्टेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MSPI. ये मिनिस्ट्री के अंदर NSO ऑफिस होता है. ये आपका हाउस होल्ड सर्वे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करवाते हैं. उनके बेसिस पे ये वर्ल्ड बैंक ने ये असेसमेंट दी है. नाउ द ओरिजिनल डेटा जब अवेलेबल नहीं होता, कई बार ऐसा होता है, तो उसको वो मल्टीपल जो अवेलेबल ग्रुप डेटा होते हैं उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहां से हमें पता चलता है कि गिनी इंडेक्स क्या होगा. दिस इज द डेटा दैट आई एम कोटिंग फ्रॉम हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे SCES 2022-23. So from here you see the average MPC, this is monthly consumption expenditure data by social groups in 2022 and 3 ऑल इंडिया लेवल पे. तो इसमें हम करते क्या है, हाउस होल्ड का जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स गिव्स यू MPC. टोटल जो हाउस होल्ड का, पूरे हाउस होल्ड में 5 से 6 मेंबर्स हो सकते हैं, 8 मेंबर्स हो सकते हैं, तो उनका टोटल मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ members in the household, you get MPCI. So across social groups you see scheduled tribe, caste, backward class and others, overall rural और urban area में disparity आपको दिखाई देगी. But within rural areas you see that it is 3000 for scheduled tribe, 3500 for scheduled caste, other backward classes 354472, all in all 3860, and for urban areas is 6.6521. So इसको अगर हम प्लॉट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं vis-a-vis other countries around the world, that gives you a very interesting story. This data is, I have just quoted for representative purposes, that how we get the survey done. Now the average MPCI by household types in 2022 and 3 ऑल इंडिया लेवल पे भी दो हाउस होल्ड के टाइप्स हैं. एग्रीकल्चर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, नॉन एग्रीकल्चर सेटअप में, रेगुलर वेज, casual labor in non-agriculture, etc. On the basis of which this is how we plot the data. This is a representative survey. It's not a survey of 1.46 billion Indians. It's a representative survey, but which has huge credibility, which has accuracy, which has data integrity as well. और globally इसको आप comparison इसका हो सकता है. On the basis of the Gini index, then you divide the countries in 3 types: countries with moderately high inequality, countries with high inequality, and countries with very high inequality. तो जिनका 30 से 40 के बीच स्कोर होता है उनको हम बोलते हैं moderately high inequality. More than value of 40, it means country has high inequality. और 45 जिनका होता है उससे ज्यादा, उसको हम बोलते हैं very high inequality. Now just see this map.
This is the world map on the basis of Gini Index 2023 data, which is available. The map you can see it is plotted, and the less the color is, it means lesser the Gini coefficient. Coefficient is what? You divide the index by 100, you get the coefficient. So here you see the Indian color is slightly better compared to the Chinese, compared to the Americans, compared to the Brazilian economy. So means we are far more equal compared to America or compared to China. So within India जो हैव और हैव नॉट्स के बीच में गैप बताया जाता है कि अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, ये बात ये सिर्फ एक क्लीशे बन के रह गई है, because it is being said so many times that people take it for granted कि this is the fact. क्लीशे ineffective है. That is what this data is telling us. Now ये जो इंडेक्स है इंडिया का 25.5 पे है और क्लासिफाइड वर्ल्ड बैंक ने किया एज ए कंट्री विद ए मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी और जस्ट ए हाफ पॉइंट अवे, दिस इज इंटरेस्टिंग, फ्रॉम जॉइनिंग द क्लब ऑफ लो इनइक्वालिटी कंट्री लाइक स्लोवाक रिपब्लिक एंड स्लोवेनिया और बेलारूस, जो कि लो इनइक्वालिटी क्लब में आती हैं. सम मोर एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड एंड वी विल बी जॉइनिंग दीज लो इनइक्वालिटी कंट्रीज. रीजंस रिडक्शन के क्या हैं? What India has done that we have reduced the inequality to such an extent, to such an level. So India में you have to remember always that we are a democratic polity. Our leaders, they are dependent on the voters for their survival in high offices. Their access to status, access to power, access to privilege is dependent on what? People's vote. So there is inbuilt an accountability mechanism within democratic polity of India. So even though when we got our independence, we were still a young democracy. We were yet to learn the basics of democracy at the grassroots level. उसका जो पेनिट्रेशन था, उसकी जो अवेयरनेस थी, वो इतनी ज्यादा नहीं थी. हाईली इलिटरेट सोसाइटी, serious issues of inequality, serious issues of poverty, serious issues of disease prevalence. Still we went for democratic polity in 1947. That was a testament of basically of Indian leadership trust on Indian masses, which paved dividend. और वेल्थ क्रिएशन को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी थी. गरीब की वोट की वैल्यू भी उतनी है जितनी एक अमीर की वोट की वैल्यू. तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हुई बिटवीन 1997 2022 के बीच. अगर हम डेटा को देखें, डिक्लाइन फ्रॉम 29.7 टू 25.5. गरीबी हटाओ के बारे में बात की गई 1970s में. गरीबी हटाओ के बारे में बात की गई. पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और उसमें लोकल एक लेयर ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट की गई. देयर आर मेनी सच इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स व्हिच वर टेकन. गवर्नमेंट्स केम, गवर्नमेंट went, but schemes, programs and policies to benefit the poor, to benefit the marginalized, to benefit the people who are suffering from social exclusion continued with greater focus. पिछला जो एडमिनिस्ट्रेशन आया उस वो मनरेगा लेके आया. ये जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की गवर्नमेंट 2014 में आई, 2014 में आई, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना, ऐसी योजनाएं वो लेके आए जिससे एक्सेस टू रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, वाटर, gas connections that has substantially improved. And that is how we see कि इंडिया में कैपिटलिज्म भी 1991 के बाद भी went for the free market economy. तो 1991 के बाद ये कहा जा सकता है कि capitalism is not at cross purposes with democracy. लाडली बहना योजना, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे एल्डरलीज के लिए, हमारे वुमन पॉपुलेशन के लिए. क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप डिपेंडेंट है लोगों के वोट्स के ऊपर. और बीच में 1993 में 26.1 था जो बढ़ के 28.8 हो गया 2011 में. तो लोगों के बीच में रिलेटिव जो इनइक्वालिटी है वो इंडिया में कम हो रही है. अमीर और अमीर नहीं होता जा रहा, गरीब और गरीब नहीं होता जा रहा. ये जो सेंसेशनल रिपोर्ट्स आती हैं ऑक्सफैम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, वो फैक्चुअली करेक्ट होती हैं, लेकिन कंपेयर्ड अगर आप उसको करें ब्राजील से, चाइना से, अमेरिका से, तो आपको पता चलता है कि ये काफी एग्जैजरेशन के साथ ये चीजें इंडिया के बारे में जो क्लीशेज हैं कि इंडिया पुअर है, सुपरस्टिशियस है, हाइजीन नहीं है, हाईली इनइक्वल है, ये बातें बार बार दोहराई जाती हैं, रिपीट की जाती हैं,
और हमारे कॉमन सेंस में, हमारी कॉन्शियसनेस में ये उतर जाती है। अमेरिका के बारे में ऑक्सफोर्ड ऐसी बातें नहीं करता, और करता भी है तो वो वाइडली पब्लिश नहीं होती। तो रिटर्न जो है रिफॉर्म्स का वो हमें मिला है 1991 के बाद। नाउ इट इज ट्रिकलिंग डाउन एंड टुडे इंडिया इज द मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटी दैट इट हैज एवर बीन इन द लास्ट 45 ईयर्स। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम जो फ्रेमर्स थे उनका जो सपना था फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, दैट इट विल गो हैंड इन हैंड, वन विल सिक्योर द फ्रीडम एंड द लिबर्टीज and the rights of the people, and one will make them grow economically, culturally, otherwise that has been, looks like that has been a success. लेकिन कुछ हमें हमेशा, because social science is a critical science domain, we have to keep that in mind for UPSC preparation, that you have to keep that in mind. There are limitations with Gini index. Yes, there are. With every economic parameters, there is always limitations, like they are not unique. Two countries can have the same Gini index. That is also a possibility. दूसरा, इट इज पॉसिबल फॉर द कोफिशिएंट कि डेवलपिंग कंट्री का राइज हो जाए, बढ़ जाए, जैसे इंडिया का 1991 के बाद बढ़ गया 2011 तक। क्यों? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ जनरेशन हुई, जीडीपी हमारी बढ़ी, जिसका फायदा लिमिटेड लोगों को हुआ कंपेयर टू द लार्जर मासेस। तो इनइक्वालिटी समाज में बढ़ गई। बात सही है, उचित है, फैक्चुअल है, लेकिन वो मोमेंटरी होता है, कुछ समय के लिए होता है, फिर धीरे धीरे ये जो जीनी इंडेक्स है और द कोफिशिएंट है इट एडजस्ट। और ये बात सही है कि डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया के लिए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की वजह से ये कोफिशिएंट हमें बता रहा था कि इनइक्वालिटी बढ़ी है, लेकिन अब वो फिर से कम हो गई है 2011 के बाद से। एंड प्लस इट इज नॉट एडिटिव अक्रॉस ग्रुप्स, द टोटल जीनी ऑफ ए सोसाइटी in a way is not equal to the sum of the genies for its subgroups. This is also not true. तो अर्बन रूरल एरियाज में जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आप उसको जोड़ के एक साथ कोफिशिएंट नहीं बता सकते। और मेथोडोलॉजी वेरी करती है, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन भी कई बार स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है, लेकिन उसमें भी एरर्स होते हैं। बिकॉज इंडिया में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे है और जो अमेरिका का सर्वे है, जो ब्राजील का सर्वे है, कई बार डेटा की इफिकेसी के बारे में बात होती है, कई बार सैंपल साइजेस के बारे में बात की जाती है कि कम है या ज़्यादा है। जो क्वेश्चनर्स पूछे जाते हैं इन सर्वेज में उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट कोई नहीं है ऐसा वर्ल्ड बैंक का जिसके आधार पे पूरे दुनिया भर में सारी कंट्रीज एक जैसा सर्वे कंडक्ट करें एंड वी कैन कंपेयर देम अप्रोप्रिएटली। But despite of the limitations, despite of the issues that may arise with the Gini index, this is still the world's beating index for measuring inequality in a society, economic inequality in the society. And that tells you that this surprise has been a pleasant surprise for Indian leadership, for Indian people, and particularly and most importantly, the well-wishers of India. All of us, that we want India to succeed in a sustainable way, in a inclusive manner. And this report is basically affirming our belief in the Indian story. That's all for this lecture. You can join me on my personal Telegram channel as well. I'll meet you again with some new interesting topic at SRIRAM IAS YouTube channel only. So subscribe, like, and share the channel. And definitely you should make sure that the other aspirants that you know should get access to this channel, which is there. And all the important lectures, जो different PVQ series चल रही हैं, जो different current affairs के issues discuss हो रहे हैं, जो static part discuss हो रहा है, you should get access to it and benefit it immensely, which will be very grateful for your UPSC Civil Services examination. Thank you for giving me your time.